Hello students, I hope you all are doing good. So in our chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate, I have already given you the introduction to the chapter, and I have given you an activity to do, that you have to collect the data of weather from a newspaper or from news reports. So what kind of data you must have collected? Let me show you. In a newspaper you might have seen a temperature that was maximum temperature. आप लोगों ने maximum temperature देखा होगा और minimum temperature भी देखा होगा. Okay, so you have to note it down, the maximum temperature and the minimum temperature. Then what you have seen the next, about the sunset and sunrise. So you must have seen the timing of sunset and sunrise, just like 5:41 p.m. is the time of sunset and 7:15 is the time of sunrise. Okay, then moonset, you must have seen the timing of moonsets also. Then mist, fog in the morning, partly cloud sky, minimum temperature will be around 4 degrees Celsius, maximum humidity on Monday 83% and minimum 33%. So what you have seen? You have seen in this newspaper about the temperature, about the sunrise and about the sunset, moonset, moonrise and about the humidity. So these are the basic elements of a weather: the temperature, the humidity, and about the sunrise and sunset, rainfall. These type of factors are called the elements of a weather. We can judge or we can decide a weather according to these type of elements. Okay, so let me introduce you to the weather again. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature. Just read the definition again. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. यानी यही डे टू डे कंडीशंस किसकी? टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की एंड विंड स्पीड की. इन्हीं सारी कंडीशंस को मिला करके हम लोग क्या बताते हैं? वेदर बताते हैं एक प्लेस का. एंड these कंडीशंस, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल एंड द विंड स्पीड आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द weather. So separately we are going to study about the elements of the weather. Temperature, you know about the temperature, it is the measure of the degree of hotness or coldness. Remember, आप कितना कोई चीज़ हॉट है, कितना कोई चीज़ कोल्ड है, आप किससे मेजर करते हो? टेम्परेचर से मेजर करते हो. बट फॉर वेदर, डू यू रिमेंबर, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर देयर वाज अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके, बट फॉर मेजरिंग the temperature for weather we use a different kind of thermometer, that is called maximum minimum thermometer. That is called what? Maximum minimum thermometer. We measure the temperature of weather using a maximum and minimum thermometer. The other element comes the humidity. So how we are going to measure the humidity? For measuring the humidity we use percentage, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट है, एंड द डिवाइस यूज वाटर वेपर एटमोस्फियर में प्रेजेंट है, एंड द डिवाइस यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी परसेंटेज इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर. द डिवाइस यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड hygrometer. Okay, so we have studied about the two elements, that is temperature and the other element is humidity. Another element comes the rainfall. So how do we measure the rainfall? We measure the rainfall using the rain gauge. Now what is rain gauge? Rain gauge क्या होता है बेटा? Rain gauge is an actually funnel over a tumbler. टम्बलर के ऊपर एक हम लोग फनल रख देते हैं और जो वाटर उसमें कलेक्ट होता है वी मेजर इट इन मिलीमीटर. हम उसकी लेंथ नाप लेते हैं किसमें? मिलीमीटर में. एंड देन वी से दैट टुडे द रेनफॉल इज 7 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर. एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? उस वाटर की हाइट नाप रहे हैं जो उस फनल में या रेन गेज में कलेक्ट हुआ है ड्यू टू रेन.
So we measure the rainfall using a device called rain gauge. तो हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स आज पढ़ लिए of weather, that is temperature, humidity, rainfall, and the fourth element of the weather is wind speed. So we measure the wind speed in what? Kilometer per hour. जैसे कि स्पीड मेजर करते हैं ना हम किसी भी, जैसे बाइक की स्पीड, कार की स्पीड, वी यूजुअली मेजर दैम इन किलोमीटर पर आवर, एंड हेंस हम लोग विंड का स्पीड भी कैसे मेजर करते हैं? इन किलोमीटर पर आवर. ओके, so we have studied about the 4 basic elements of the weather. Those are temperature, humidity, rainfall, and wind speed. Okay, next we will continue in the next class. Thank you.